Hello, hello guys, welcome to day 4 of our no code tool challenge. Hopefully this time I will not miss. Okay, welcome to the stream guys. So today so sorry for the late. Actually, I I stuck with one friend and I talked to for 2.5 hours. That's why I got late. Nobody. We will coming daily no matter what. कम से कम 30 days to करना ही minimum. और आई एम ट्राइंग फॉर 100 days देख के बेसिकली वही है कि कितना पैसन रहता है तो डेबिट डिपेंड बट आई फील ऑनलाइन कमिटेड रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्विच। लेट मी जस्ट बस एक बार ना ये सेट कर लेता हूँ स्क्रीन, इसके बाद एक मिनट। ओके अरे ये मेरे को ना मैनुअली सेटअप करना बड़ा अजीब लगता है, तो बार बार इसको करो, यहाँ से कैमरा हटाओ, वहाँ करो, बड़ा अजीब सा है। कोई कुछ जुगाड़ बता दे तो हो जाए, सीखेंगे यार इसको फुर्सत से। होपफुली मैं लाइव होऊंगा। एवरीथिंग इज वर्किंग नाउ, बैक टू आवर वर्क। तो हम जैनो पे थे। यस, मुझे यूट्यूब पे एक वीडियो सीरीज मिली है जैनो। अगर मैं सर्च करता हूँ तो मिलेगी क्या वो? यस इसकी तो बेस्ट तो है, हमें इश्यू हो रहा था एपीआई समझने में। तो भी हाँ, मैंने वो उसका रिप्लाई भी आया था, सही लोग हैं। हाँ, तो इसमें हम ना एपीआई लगा रहे थे AppGyver में। हम एपीआई ऐड कर रहे थे इस वाली में। यस, यहाँ पे अब हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मैप कैसे हो। बेटा अब हम देखेंगे डेटा मैप। This video is the continuation of the process of the to-do app, the NoCode, AppGyver, and Xano to-do app. As you can see, I'm gonna. Sorry guys, अगर कुछ हुआ नहीं क्योंकि मैंने गलत हेडफोन से लगा रखे थे। Let me like again. Let me check the stream first. अजीब सा है, कोई कुछ जुगाड़ बता दे तो हो जाए, सीखेंगे यार इसको फुर्सत से। होपफुली मैं लाइव। हाँ ठीक है, अब आवाज़ आ रही है सर, पहले भी आ रही थी, कोई इशू नहीं था, है ना। तो अभी चलते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। Start off here, look down at my phone. I'm going to start up the AppGyver emulator. We are going to start things off with a little bit of cleanup. My plan this time was to take us
some data and filter based on name, I think is where we're going to start that process. No, pardon me. I went into the post, and what I really want to do is go into the Git. तो बेसिकली हमारा ये है कि अभी हमारा जो APIs है ना, ये मैप नहीं हो रहे हैं कि जैसे नेम फुल नेम तो इस वाली पर्टिकुलर जो हमने API बनाई है ये वाली, तो इसके नेम की पर आए कि जैसे इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन तो इसमें 3 पैरामीटर हैं, हमने भी ऐड कर दिए हैं, बट अभी हमें पता ही नहीं कि क्योंकि अभी एम्प्टी जा रहा है, तो सबसे पहले देखना है कि वो एम्प्टी ना जाए. Query all to do records. Okay, so to start off with, as I said, I typically do things from data up to the user interface. So we once again are starting with the data. I'm going to come into the API, and what I'm looking to do is add a text field that will be passed in to the user of the API, which in this case is the mobile app. So the user, I need to connect that input field a person to name. Company what the as well as, and I'm gonna have you might interrogate how you and pick to AppGyver where I'm in my to-do app. I'm going to go to the main navigation and pick data, and I'm going to go into my to-do item. I don't change my base, but I am going to change my Git collection so that we can put the filter in. And for that filter to work, I need to add a query parameter, and I'm going to give it a label. The label is what's going to be used throughout AppGyver to understand what this is. And then the key, the key needs to match what I put in Xano, which is filter. It's text. It is not static. It is something that changes dynamically based on user input, so I turn that off. And it is optional. You don't have to use it, so I'm going to leave is optional on. Okay, so now we go back to the Git collection. Now we're going to test what we just created. If you notice, now we have a filter here. So I'm going to say, let's go with static text, and we'll do the same thing we did in Xano to make sure. Oh, हमारे में ये नहीं आया था ना. हाँ, let go data left इसमें post में. Oh, we got this. तीनों हमें मिल गए थे. तो अभी आया, उस दिन नहीं आना था. For example, मैंने जो testing email है testing@gmail.com और पासवर्ड है ABC run test. ये empty जा रही है ना डेफिनेटली यार. auth रिसोर्स URL गलत है यार. रिसोर्स URL भी तो गलत है. हाँ, साइन अप तो जा ही नहीं रही. रिलेटेड पाथ empty जा रहा है. empty जा रहा है डेटाबेस. हाँ, देख लीजिए उस दिन वाला ही है. हम देख लीजिए. मैं ये कह रहा हूँ जब ये टेस्टिंग दिस मैं अगर रन करता हूँ इसको तो मेरे को एम्प्टी वाला, अब देख यहाँ पे एक एम्प्टी बन गया होगा. ये वैल्यू जा ही नहीं रही ना उस वाले में. हाँ देखना, ये वैल्यू जा ही नहीं रही है. मेरे को वही तो समझ में नहीं आ रहा. मेथड अनेबल्ड, मेथड डिसेबल्ड. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्कीमा मेरे को वही तो है कि हमको जा क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैंने पोस्ट तो किया है. ऑटो पर देखते हैं तुम. हाँ, जानो में देख लेते हैं.
टोकन किया। तो अभी मेरे को रिस्पॉन्स वाला तो ये क्यों नहीं, मेरे क्यों नहीं जा रहा। ये बोल रहा टेक्स्ट में यहाँ पे जो तुम एंटर करोगे कंपेयर वे टू ब्रिंग डेटा इनटू तो ये भी बंदा यही कर रहा है। Typed in OG, run test, and I just get the one item back. Now I do not need to set the schema again because the data I'm returning is no different. It's just that I'm filtering that data. Okay, so at this point, I now have my data figured out. So now I'm coming back to my main. वी डोंट नो कि इसका कैसे चल रहा है, बट हमारा तो सेम इश्यू आ रहा है क्योंकि हम जो डेटा यहाँ पे सेंड कर रहे हैं ना, ये नहीं जा रहा है हमारे सर्वर पे। ओके, लेट चेक द एपीआई। क्या पता एपीआई में इश्यू है ना। इसको रन एंड डिबग करते हैं। नेम क्या करते हैं, दे ही ना रहा हूँ टेस्ट का तो। एपीआई में कुछ इश्यू हुआ। पासवर्ड, हाँ पासवर्ड भी प्रोटेक्शन है ना। गो बैक ले लेते हैं। हाँ एपीआई तो परफेक्ट है, बस प्रॉब्लम है कि यहाँ से एपीआई कॉल टैप नहीं हो रही प्रॉपर्ली। अरे ईमेल यार, अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा ये क्यों है। मेरे को अभी लेटेस्ट समझ आया कि ये क्यों है। जब ये कस्टम ऑब्जेक्ट में ही जब मुझे वैल्यू पास करनी है, जब मेरे को कस्टम वैल्यू में ही पास करनी है, जो कस्टम में ही पास करनी है, ये क्यों है। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। ये रिक्वेस्ट अभी का वो अंकल का लिखते थे Screen, and what I need is, you know what, let's just go with a simple यार मैं primitive input field. You could use a search field as well, and I will probably do some enhancements later on the videos to make it. I've got an example of that I've done over time that's got, I guess, more interesting, I'll say, more interesting layout. And I up to the top, you have to come down. But you're just going to want to spend a little time fixing up my data variable. If you notice, it sees, since it's attached to the data resource, it sees
that it needs a filter or can have a filter. So what I need data variable. This is selected again. if you notice, it पेज माउंट हो रहा है ना बटन को लेकर sees, since it's attached to the data resource, it sees that it needs a filter or can have a filter. So what I need to do is connect. Oh, you know what I forgot? Always forgetting one thing at least. I need a page variable to associate with my input field. So we're going to call this filter text. Okay, so I've created a variable on the page, and what I need to do is associate this variable on the page with the actual input field on the page. Okay, page variable, there it is. Much happier now. Okay, so now what happens is every time I type something into this input field, it's going to go into that page variable. And anytime I change that page variable, it'll be reflected in the input field. That's called two-way binding. It's an interesting term. It may become relevant to you, but that's what that is two-way binding. So now I can go back to my variable, and now I'm going to go back to the data variable, pick to do, and now I can actually do the filter connection that I wanted to do. Okay, they have created a page variable. Basically, ये चीज़ से page variable में अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ वेरिएबल नेम हो गया यूजर फुल नेम टैग्स ना सेव और यहाँ पे पेज वेरिएबल में जाएगा यूजर पासवर्ड सेव ऐड हो गया यूजर ईमेल एड्रेस सेव अरे ये तो कुछ आया नहीं यूजर ईमेल यानी ये क्यों जो हो रहा
अरे यार ये अलाइज करो ना, 4 का ही हो सकता है बस, 4 करेक्टर। पेज में बेसिकली पेज वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। पेज वेरिएबल ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, मुझे लगा सिंगल करेक्टर ही अलग होगा, सिंगल करेक्टर क्या होगा, यूजर होगा नेम। ये ना बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। अब मेरे को जाके व्यू में नेम पे नहीं न्यूज बनाने के लिए था। Pick to do can go back to you, but that's what that is to binding. It's an interesting term. It may become relevant to you, but that's what that is two-way binding. Value. ओके हमको सेट ईमेल वाले में ईमेल जाएगी, ईमेल जाएगी, सेव हो जाएगा। इसके पासवर्ड वाले में वैल्यू में डेटा वेरिएबल, पेज वेरिएबल, ईमेल। अच्छा binding. Okay, so now I can just need to save it. Go back to my variable, and now I'm going to go back to the data variable, pick to do, and now I can actually do the filter connection that I wanted to do. ये बोल रहा है इसके वैल्यू में जाएगा डेढ़। मेरे को अभी तक समझ नहीं आया, मेरे को 3 ऐड करने हैं, इसमें तो एक ऐड करना था ना, इसको गेट एपीआई कॉल थी। There we go, filter text. So this now means that anything that I type into the input field will be put into the page variable, and that page variable is being used to call the data resource through the data variable, and it'll pass filter in. I usually forget 1 or 2 items as I go through this. So what we're going to do is, I think we're probably about ready to test. No, we're not. I just remembered what I'm forgetting. What I need to do is every time the component changes, so anytime the input field has text typed into it or deleted from it, this trigger down here in the function or the flows will be fired. And what I want to do, let me go look in the bottom left here. Let me move myself out of the way. What I need to do, I'm going to need a set data variable. But before I set a data variable, I am going to need the get record collection. So I change stuff in the input field. This trigger fires. When this trigger fires, I want to call the get record collection. It already picked to-dos because that's the only item I have, like this. Once you have more data items, you'll have to go in and actually pick them like I just did there. And then once again, I need to attach the filter. It is the data variable, page variable, filter text. Okay. So now I have the changing of the input field, firing off the request. And then I am setting a data variable, which is the to-do data variable based on
Here we go. Who is he? Okay. Is he the So I'm jumping around here a lot. Let me just slow down for a sec. I now, after I get the data from the record collection call, I need to put that data in my to-do list data variable on that page, which I'm doing here. And I need to assign it from the output value of another node. That other node was the get record collection ahead of this. And I need to get the record collection that I received from that, which is a collection of all records. So at this point, I'll have all the to-dos put into the to-do data variable, and that'll be based on the filter. So hopefully that all ties together for you. You're always welcome to rewatch the video if I'm going through it too quickly. Now, the one thing that I like to do that I'm going to go ahead and throw in here now, just because it'll make life friendlier, is I'm going to go into the flow functions here at the bottom left. And I'm going to do a search for a function that is available but not installed by default. Oh, यहाँ एक अलग पूरा वो है. Oh. भैया कितने काम है. अच्छा ये कंपोनेंट बने हुए हैं. ट्रैक में कुछ नहीं है. मतलब हमें अपना बस वही ढूंढना है कि ये बंदा तो ठीक कह रहा है कि वैल्यू तो आ गई. चल मेरी हमको मैं आकर के बोलूँ मेरी वैल्यू तो आ गई. व्यू का टॉगल बचा मतलब दिस है ना. टैग हो तो क्रिएट रिकॉर्ड में क्या है. हाँ यहाँ से पेज वेरिएबल को लिंक कर देंगे. नेम से नेम को लिंक कर देंगे. सेव. हाँ इसको ईमेल को ईमेल से कर देंगे. पेज वेरिएबल ईमेल. पासवर्ड को पासवर्ड से लिंक कर देंगे. पासवर्ड मेरे को लग रहा है कि हमको ये और बेटर है अगर मैं कस्टम ऑब्जेक्ट में जाके, क्योंकि वहाँ भी कस्टम ऑब्जेक्ट में जाके हुआ डेटा पेज वैल्यू फुल नेम सॉरी ईमेल पे चला गया. पेज वैल्यू ईमेल सेव नेम डेटा वैल्यू नेम फुल नेम. इसके बाद पासवर्ड सेव. हाँ अब ये हो गया दिस. अब मेरे को ये है. मेरे को हमको सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है. जैसे ये ऑथ हुआ ये रिस्पॉन्स दे रहा है. ऐप वेरिएबल चाहिए ना मैं तो ऐप वेरिएबल हो गया ऑथ टोकन. टैक्स दे रहा है. ठीक है कुछ नहीं. सेव कर दो. अब मेरे को ये हुआ. इसके बाद ये क्रिएट रिकॉर्ड करेगा. एपीआई कॉल होगी है ना. जो भी है ये सब एपीआई कॉल होंगी. इसके बाद एपीआई कॉल होगी. इसके बाद डेटा सेव होगा. सेट ऐप वेरिएबल
अरे set a variable name or token. इसकी वैल्यू आएगी अरे यार ये तीन कैसे इसको मिल गए एरर मैसेज रॉ एरर क्रिएट रिकॉर्ड हुआ मेरे को लग रहा है यहीं पे मेरे को कुछ डिफाइन करना पड़ेगा हमको अरे ये कैसे स्टोर करेंगे हम मेरे को समझ में नहीं आ मेरे को ये है कि देख वहां से जो डेटा मिल रहा है वो ऑथ टोकन करके एक वेरिएबल है parameter query name para full query result it is name full name फ्लो फंक्शन में कन्वर्ट हो गया इनका फ्लो फंक्शन क्या है अरे छोटा मोटा टूल नहीं है यार मेरे को सिंपल सा है फ्लो फंक्शन को कॉली मारो अच्छा ओ अगर रिकॉर्ड में हुआ तो ये हो गया डेटा रिस्पॉन्स एक पोर्ट में है ना जो मुझे क्या पता भूसड़ी वाला कैसे आएगा सॉरी सॉरी आई एम ये है फेल का तो फेल पर हम डायलॉग दिखा तो सिंपल भाई मैसेज तो यहाँ से आएगा मेरे को लग रहा है कि हर कुछ चीज़ ना सेव करनी पड़ती है पहले तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट है भाई तो मैं रिकॉर्ड को कहाँ सेव करूँ यार इसमें यहाँ तो बटन होना चाहिए कहाँ सेव करेगा हमको कोई लेट इस वीडियो को दोबारा देखते हैं And it's called functional friend. So one thing to rewatch the video if I'm going through it too quickly. Now, the one thing that I like to do that I'm going to go ahead and throw in here now, just because it'll make life friendlier, is I'm going to go into the flow functions here at the bottom left. And I'm going to do a search for a function that is available but not installed by default, and it's called debounce.
And what debounce does for you, after I've installed it here, I'm going to drag it out onto the palette. Debounce allows you to only call the get collections every few seconds. So instead of every time I type a character firing off that API, now what I'm doing is every, let's say, 0.2 of a second, every 200 milliseconds, it will call. So if I type 2 or 3 characters very quickly, it'll only call the API once, and it makes for a much smoother user interface. Okay, I think I have most of what I need now. So what we're going to do is take the chance that I'm right, and we're going to come back to the phone, and let's see what happens when I type in VA. There we go. It's always fun, isn't it? So simple in the long run, but so much fun. If we type in WAS, we've got a W in 2 of those, so that shows up, and then I get them all back. Okay, so that is the video for today. I think the next time what we're going to do, if I keep to my schedule, is whenever we click on one of these list items, I want to take us to a new screen that shows the detail of that item. And some of the options we have for that detail will be obviously the name and description, but we can also show the create date. And maybe we'll even add in some information about whether it's completed or not. Once again, if you have any questions, please let me know, and look forward to talking to you on the next. पहला वाला ट्यूटोरियल देखता हूँ मैं इस बंदे का पहला वाला ट्यूटोरियल 19 हो गया बंदा इसको लगातार मेहनत पे मेहनत की जा रहा है अरे भैया बंदे का पहला वाला अरे वीडियो दिखा दो चाचा पार्ट 1 इसमें ना API ऐड किया है through the API into Xano, collecting the 2 items that I created in the database and returning those. So to make it easy to know what variables to work with, I'm going to set the schema from the response. And now I have AppGyver recognizing for this data resource those. ये अंकल ने सही बताया अंकल ने बता रहे हैं कि यहाँ पे जाओ डेटा में चूज करो पोस्ट में क्रिएट रिकॉर्ड स्कीमा सेट स्कीमा प्रॉपर्टीज ये हटानी पड़ेगी रिमूव four fields. So now I'm going to switch back to one layer up. One thing I'll show you that's kind of a trick thing here is if I try to click on empty page, it's not doing anything. But if you look in the upper right of the screen, you see the save button bouncing. You have to remember to save when you're leaving across main navigation points. I still to this day forget to do that on occasion. Okay, so now where we're at is on the main screen of this app, which gives me control. And then I know I'm going to want this stuff to be pick a list into the scroll view. So at this point, I have a page layout that I can see on the bottom right. What I need to do now is create some variables on this page to support the data that I'm going to pull back through the API. My starting point for that is attaching a data variable for this page to the data resource I did in the main data navigation. You'll see it right here, to do. That is the data resource I created. I create it here, come over and look at the variable type, collection of data records. That's what I want to use. I'm not getting a. तो बेसिकली अंकल कह रहे हैं कि बैग जाओ अरे यार कहाँ गए हम ये बहुत इरिटेट करते हैं मैं तो इसमें वेरिएबल वाले में जाओ डेटा वेरिएबल बनाओ सिंगल रिकॉर्ड बनेगा
आईडी बेंचोत क्यों आ रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कलेक्शन ऑफ मैं करूँ उनका क्या कर रहा है? A single item, and I'm not creating a new item. So I'm going to save that. And now I'm going to introduce you to what is some of the data, what I want to use. Come over and look at the variable type, collection of data records. That's what I want to use. I'm not getting a single item, and I'm not creating a new item. So I'm going to save that. And now I'm going to introduce you to what is some of the data flow capabilities. When I add a data variable to a page, I automatically get a default flow that will call the API. And load it into the variable that I just created. Now, by default, AppGyver gives you a delay mechanism here in the flow. So every 5,000 milliseconds or every 5 seconds, it'll make this call again. I'm going to go ahead and leave that for now, but a consideration you want to have is if you have a detailed screen of data where you might be doing edits, it's best to remove this delay, in my opinion, such that it doesn't automatically get the data from the server again and potentially overwrite what a person is typing in at that moment. On a list, I'd rather have it automatically refresh, so if people are adding things, I'll see them without having to refresh the screen. So now that I have a data variable set, I am going to switch back to the view, and I'm going to click on the large image list. You can click on it on the bottom right or visually here, whichever is easier depending on the type of component. First thing I need to do is attach that visual to the data variable that I just created on the screen, and you'll see here it is. We say to do and save, and now you'll see it recognizes that it's going to get multiple items back. So now that I have मेरे को ये है कि यहाँ पे जब भी मैं डेटा चाहूँगा गेट रिकॉर्ड करते हैं ना, इसको ट्राई करके देखते हैं क्या हो क्या रहा है। ये वाले चैनल वाले में जो डीबी है इसमें डेटा कितना बड़ा है। ये क्या नोटंकी है भाई, कुछ तो गलत हो गया है। रुको भाई, ईमेल एंड पासवर्ड कुछ बचा हुआ है। ईमेल एंड वैल्यू
एरर आई क्या? कुछ भी नहीं हुआ। एरर कहते आ गई। अरे आउटपुट एट 1 पे आ रहा है। मेरे को एक और चीज नहीं आ रही कि क्रिएट रिकॉर्ड। तो ठीक है अंकुर, क्रिएट रिकॉर्ड तो ठीक है, मेरे को रिकॉर्ड क्रिएट ही तो करना है हमको। यहाँ से क्रिएट किया। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्रिएट रिकॉर्ड में ये आया, रिसोर्स नेम आया दिस, डेटा रिसोर्स दिस, यूजर ऑथ। अब इसने नेम के मैंने कहा कि पेज अवेलेबल, फुल नेम सेव। मैंने कहा कि ईमेल डेटा अवेलेबल, ईमेल सेव। मैंने कहा पेज पास, है ना? ठीक है, रिसोर्स नेम ये हो गए। अब मेरे को ये हो गया। ठीक है, अब मेरे को ये है यहाँ पे सेव अगर मैं करूँ, ठीक है, एक एपीआई थी जिसमें से ये नेम पे फुल नेम का बाइंड हुआ, नो वैल्यू। इसको मैंने वहाँ पे बाइंड किया, इनको मैंने यहाँ बाइंड कर दिया। अब है क्रिएट, बिल्कुल। अब क्रिएट रिकॉर्ड अगर यही है ना, पहला वन तो सक्सेस हुआ और फेल हुआ। अगर मैं देखूँ तो आउटपुट पे अगर बात करूँ, found data resource created response return by user after the record is successfully created, bounce return by। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, सिंपल सक्सेस। अब मैं चाहता हूँ
मैं ये चाहता हूँ ये आउटपुट ऑन क्यों आता है यार, ये पता नहीं। फेलियर फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता भी हूँ तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, फेलियर आया है ना। ओके अगर मैंने किया सक्सेस आया, फेलियर आया। अब मैं देखता हूँ टीवी में, हाँ हो गया परफेक्ट। यहाँ से पे कॉल तो हो गया, क्रिएट रिकॉर्ड तो हो गया। अब इसकी डंप कैसे लेट ना, परफेक्ट। अब मुझे फेलियर में ऑफिस, अच्छा अंकुर, तो मेरे को कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्रिएट रिकॉर्ड जब होता है तो इसका जो रेस्पॉन्स है ना अंकुर, मुझे इसके रेस्पॉन्स को भी सेव कराना पड़ेगा, राइट। अब मैं इसके रिस्पॉन्स को कैसे सेव कराऊंगा, रिस्पॉन्स को कैसे वो करते हैं इसमें, हाँ वो हम शायद यहाँ से कर पता नहीं भाई, ये नहीं चल रहा, इसका अलग दर्द है। अच्छा अरे भैया स्कीमा में ऐड करेंगे, और दिस स्कीमा क्रिएट रिकॉर्ड, रुको एक मिनट में, एक मिनट और कस्टम, यार ये जैसे है और तो में जाता है। मैं फॉर एग्जांपल बोलता भी हूँ, अगर मैं यहाँ पे टोकन लेता हूँ, हाँ, और टोकन को अगर मैं डेटा वेरिएबल की तरह ट्रीट करता हूँ, एक सेकंड,
रन एरर ये बताएगा वो, ये जो बोल दिया है वो यार, तो ये क्या है ये वो जो बोला है ये क्या है ये, कुछ जेसन ही दे देते, जेसन तो होगी क्या, ये पे फट गई। रुको मैं एक चीज देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। हाँ अब सही चलेगा, सब बनाने पड़ते हैं फिर ना। फेलियर कहाँ है, और यार वेरिएबल तो आया नहीं। अरे यार ये टाइटल है, क्यों नहीं आया फिर। हाँ, रुको एक सेकंड अंकुर, एक सेकंड एक्स्ट्रा टेबल लेते हैं। यार इसमें सक्सेस मैसेज तो आया, तो या फिर तो पास नहीं हो पाया है ना, या फिर तो जो रिस्पॉन्स है वो उस की में नहीं आ पा रहा है, की में नहीं आ रहा तो यहाँ पर देखना पड़ेगा पोस्ट में। रिस्पॉन्स में कैसे स्कीमा में ऑथ टोकन तो आ रहा है हमको। टेस्ट की है ठीक है, डेटा वेरिएबल स्टोर हो रहा है, या फिर तो ये इसमें हो नहीं रहा है सिंपल। ये फिगर आउट कैसे करता है कस्टम में।
मतलब सेव नहीं हो रहा है, मतलब मेरे को ये लग रहा है कि जो डेटा मेरे को वैल्यू आनी थी ना वो नहीं हो रही है, तो मेरे को देखना पड़ेगा वो वैल्यू कैसे सेव होती Have that attached is the data variable, but on the bottom right, or visually here, the है। or एक adding सेकंड, thing ये API कैसे with come over that did in the main data with a container that contains a scroll view that contains a list component. What I need to do now is create some variables that have a stuff to drop a things forget to do save. But if you look in the upper right, AppGyver recognizing for this data resource those fonts, and now I have AppGyver recognizing for this data resource those. हाँ देख, इसमें भी देखना यूज गेट का स्कीमा में कंटेंट दिस ऑटोमेटिकली हो गया, तो इसको तो ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सेम मेरा है तो मेरा भी तो ऑटोमेटिकली हो रहा है टोकन, तो कि मैं तो वहाँ पे प्रॉपर दिख भी रहा है ना उनको। मैंने तो पोस्ट में तो यही बोला है 4 fields. So now I'm going to switch back to one layer up. One thing I'll show you that's kind of a trick thing here is if I try to click on empty page, it's not doing anything. But if you look in the upper right of the screen, you see the save button bouncing. You have to remember to save when you're leaving across main navigation points. I still to this day forget to do that on occasion. Okay, so now where we're at is on the main screen of this app. And so I'm going to start assembling the user interface by putting a container there, page, into that image list, and we'll drop that into the bottom right with a container that contains a scroll view that contains a list. हाँ मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक व्यू में let me put one title there, हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू कंटेंट डेटा वेरिएबल, है ना। अभी जब भी होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, वही पता लगेगा है कि नहीं। डेटा वेरिएबल में ऐड नहीं हो पा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। Component. What I need to do now is create some variables on this page to support the data that I'm going to pull back through the API. My starting point for that is attaching a data variable for this page to the data resource I did in the main data navigation. You'll see it right here, to do. That is the data resource I created. I create it here, come over and look at the variable type, collection of data records. That's what I want to use. I'm not getting a single item, and I'm not. ये हो गया। Yeah, that's it. I don't, कुछ तो मैं मिसिंग कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा मिस होगा। We will learn it tomorrow. We are wrapping it
अभी इधर के लिए। आई डोंट नो, जस्ट शेयर योर सजेशन एंड ऑल, शेयर, लेट मी नो, कुछ भी है बताओ भाई, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। नाटक गया अंकल की वीडियो तो बहुत सही है, अंकल की वीडियो को फॉलो करते हैं तो बहुत कुछ पता लगेगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।